जतराः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुं सस्तनोभिर्व्यसे महि देवहितं जदायुः शतमिन्नु शरदो अन्तिदेव जत्रा न सग्राजरसन्दनो नाम पुत्रासो जत्र पितरो भवन्ति मानो मर्यारीरिकता युर्गन्तो अदितिर्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम् द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि जतो यतः समीयसि ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः हरि ओम। भव्य दीक्षांत शोभा यात्रा कर मंच पर आगमन हो चुका है। मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार एवं छत्तीसगढ़ राज्य की ओर से माननीय मुख्य अतिथि महोदय आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति महोदय का यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ तथा सभी अन्य अतिथियों का यहाँ पर मैं स्वागत करता हूँ। हम सब अपने स्थान पर खड़े रहेंगे। टाइम फॉर नेशनल एंथम। धन्यवाद। माननीय अतिथियों से महोदय से निवेदन है कि अपना आसन ग्रहण करेंगे। Honorable ladies and gentlemen, this is indeed a matter of great pleasure that 11th convocation of Guru Ghasidas Vishwavidyalaya, which is a central university established in the year 2009, is being held today on this auspicious occasion, a day just after the Uttarayan has started, and we are happy that Honorable Vice President of India is the chief guest. I welcome him. I also welcome all the honorable guests on the dais and extend a request to all of them for lighting the lamp and for seeking the blessings of Goddess Saraswati, Guru Ghasidas ji, on whose name this university is established, and Chhattisgarh Maitari, who is our Goddess Mother.
गुरु कृपा के पुण्य परस से विद्या का वरदान है। घासीदास विश्वविद्यालय हम सबका अभिमान है, हम सबका अभिमान है। मानवमूल्य का सृजन करें हम, संता ममता शांति भरे, हर्षित पुलकित हो भारत माँ, सुख समृद्धि सर्वत्र चले। विद्या मंदिर के प्रांगण से नवयुग का अभियान है, हम सबका अभिमान है, हम सबका अभिमान है। धन्यवाद तरंग बहन। विद्या मंदिर के प्रांगण से यह नव युग का अभियान है। यह भावना इस विश्वविद्यालय की भावना को दर्शाती है, विश्वविद्यालय के इस गुल गीत के माध्यम से, कि पूरे प्रदेश और पूरे देश के विकास में, राष्ट्र के विकास में एक नवयुग का प्रारंभ इस विश्वविद्यालय की अकादमिक परियोजनाओं से होता है। मैं इसके पश्चात विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी से निवेदन करूंगा, आज के हमारे इस कार्यक्रम के माननीय परम सम्मानी श्री जगदीश धनखड़ जी, आदरणीय माननीय भारत के उपराष्ट्रपति महोदय का स्वागत करेंगे एवं प्रतीक चिन्ह से सम्मान करेंगे। नन्हे पौधे की सैपलिंग के साथ आपका स्वागत। और छत्तीसगढ़ के विशेष आर्ट बस्तर आर्ट, जो कि झिटकू मिटकी का वहां पर इमेज है, उसके साथ आपका यहां पर सम्मान है। मैं निवेदन करूंगा माननीय कुलपति महोदय से छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय राज्यपाल श्री रमेंडेका जी का पुष्पगुच्छ से पौधे के सैंपल से स्वागत और साथ ही साथ स्मृति चिन्ह देकर के उन्हें सम्मानित करने के लिए। मैं पुनः निवेदन करता हूं प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का सैपलिंग से एवं प्रतीक चिन्ह से स्वागत करने हेतु। मैं पुनः निवेदन करूंगा प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी से हमारे सम्मानीय अतिथि श्री तोखन साहू जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्बन डेवलपमेंट का भी स्वागत एवं सम्मान हेतु। मेरा निवेदन है प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी से हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी का स्वागत एवं प्रतीक चिन्ह देकर के उनका सम्मान हेतु। पुनः माननीय प्रोफेसर चक्रवाल जी से निवेदन है, आज के इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री अतुल कोठारी जी, राष्ट्रीय सचिव शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास का स्वागत करने एवं सम्मान करने हेतु। मेरा निवेदन पुनः आदरणीय सर से है। आज के हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर टी.जी. सीताराम जी, AICT के चेयरमैन का यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं सम्मान हेतु। Thank you so much, sir. It is a moment of immense. मुझे क्षमा करेंगे, मैं निवेदन करूंगा प्रोफेसर आलोक कुमार चक्रवाल जी से हमारे क्षेत्र के विधायक श्री सुशांत शुक्ला जी का सम्मान करने हेतु एवं प्रतीक चिन्ह से उनका समर्पण करने हेतु। Thank you so much, sir. It is a moment of immense pride and joy for us that over the last 3 years, 15 newly constructed buildings have been completed on our campus.
To mark this significant milestone, I humbly request the Honorable Vice President of India to inaugurate these buildings by pressing the button, and it will be in the digital mode, remote button. So I request Honorable Chief Guest Sir, Shri Jagdeep Dhankar ji, to kindly inaugurate and dedicate these buildings to the university. As you can see in the background, that 15 new buildings are being inaugurated today. यह विश्वविद्यालय परिवार धन्य है आपके कर कमलों से इन भवनों के उद्घाटन हेतु। मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूं और आपका मैं धन्यवाद देता हूं। मैं अब निवेदन करूंगा विश्वविद्यालय के कुल सचिव जी से कि आगे का तकनीकी संचालन जारी रखेंगे। मैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि कृपया मुझे विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की अनुमति प्रदान करें। अनुमति है। मैं कुलपति महोदय की अनुमति से इस विश्वविद्यालय के 11वें दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। मैं कुलपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि स्नातकों को प्रस्तुत करने हेतु विभिन्न विद्यापीठों के अधिष्ठाताओं की ओर से मुझे अनुमति प्रदान करें। अनुमति है। महोदय, मैं कुलसचिव गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर निम्नानुसार छात्र छात्राओं को आपके सम्मुख डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी उपाधि हेतु प्रस्तुत करता हूं, जिन्होंने अपनी अपनी परीक्षा के पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत स्व परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि योग्यता प्रमाणित की है। मैं प्रार्थना करता हूं कि इनमें से उपस्थित अभ्यर्थियों को उनकी उपाधि हेतु अनुशासन प्रदान कर उन्हें सम्मानित करें। पीएचडी कला विद्यापीठ 8 छात्र, हिंदी 2, पत्रकारिता एवं जनसंचार 9, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान 1, पीएचडी सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ समाज कार्य 5, इतिहास 5, अर्थशास्त्र 3, गृह विज्ञान 1, राजनीति विज्ञान 1, पीएचडी भौतिकी विज्ञान विद्यापीठ शुद्ध एवं अनुप्रयुक्त भौतिक शास्त्र 4, रसायन शास्त्र 2, पीएचडी जीव विज्ञान विद्यापीठ प्राणी शास्त्र 4, वनस्पति शास्त्र 5, मानव विज्ञान एवं जनजातीय विकास 1, पीएचडी अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी विद्यापीठ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 1, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 1, इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग 1, केमिकल इंजीनियरिंग 4, सिविल इंजीनियरिंग 2, पीएचडी वाणिज्य एवं प्रबंधन विद्यापीठ वाणिज्य 8, प्रबंध अध्ययन 1, पीएचडी गणितीय और संगणक विज्ञान विद्यापीठ गणित 7, संगणक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी 4, पीएचडी प्राकृतिक संसाधन विद्यापीठ वानिकी 10, फार्मेसी 5, पीएचडी शिक्षा विद्यापीठ शिक्षा 15, शारीरिक शिक्षा 5, पीएचडी अंतर्विषयक शिक्षा और अनुसंधान विद्यापीठ जैव प्रौद्योगिकी 5, ग्रामीण प्रौद्योगिकी 2। उपाधि धारण करने की अनुमति प्रदान करते हुए निम्न निर्दिष्ट अनुशासन दे रहा हूं। मैं तुम्हें इस प्रकार उपदेश देता हूं, सत्य बोलना, अपने कर्तव्य का पालन करना, स्वाध्याय करते रहना, सत्य की अवहेलना न करना, अपने कर्तव्य की अवहेलना न करना, समाज कल्याण की अवहेलना न करना, अपनी उन्नति की अवहेलना न करना, ज्ञान की प्राप्ति और प्रसार की अवहेलना न करना, अपनी माता और मातृभूमि को देवी मानना, अपने पिता को देवता मानना, अपने अध्यापक को देवता मानना, अतिथि को देवता मानना, जो आनंदित कर्म है उनका आचरण करना, औरों का नहीं। यही शिक्षा है, यही अनुशासन है, यही उच्च शिक्षा का सिद्धांत है, यही आदेश है। तुम इसी प्रकार आचरण करना, अवश्य ही तुम इसी प्रकार का आचरण करना, तुम्हारा मार्ग कल्याणमय हो। महोदय, विभिन्न विद्यापीठों के स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक पत्रोपाधि के लिए सत्र 2022-23 एवं 2023-24 में जिन अभ्यर्थियों ने अपनी अपनी परीक्षा के पाठ्य विषयों का यथाविधि अध्ययन करने के उपरांत स्व परीक्षा द्वारा अपनी अपनी उपाधि पत्रोपाधि योग्यता प्रमाणित की है, परंतु दीक्षांत समारोह में उपस्थित नहीं है,
मैं प्रार्थना करता हूं कि उन अनुपस्थित विद्यार्थियों को उनकी उपाधि पत्रोपाधि प्रदान कर सम्मानित करें। सत्र 2022-23 स्नातक स्नातकोत्तर पत्रोपाधि कुल योग 2933। सत्र 2023-24 उपाधि स्नातक उपाधि स्नातकोत्तर उपाधि पत्रोपाधि कुल योग 2926। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के कुलपति पद के स्वनिहित अधिकार से मैं अनुज्ञा प्राप्त अनुपस्थित सभी छात्र छात्राओं को उनसे संबंधित स्नातक स्नातकोत्तर उपाधि तथा स्नातक स्नातकोत्तर पत्रोपाधि धारण करने की अनुमति प्रदान करता हूं तथा उपदेश देता हूं कि वे अपने जीवन एवं आचार में अपने को उपाधियों के योग्य सिद्ध करें। मैं कुलपति महोदय से स्वागत उद्बोधन एवं वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु अनुरोध करता हूं। यह हमारे लिए हर्ष का विषय है कि भारत गणराज्य के माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने यहाँ आने का इतना दुरूह कार्य किया, क्योंकि ट्रैवल करना इतना आसान नहीं होता है। माननीय उपराष्ट्रपति जी, मैं आपका इस प्रांगण में अंतर्मन से स्वागत करता हूं। साथ ही प्रदेश के माननीय गवर्नर महोदय रमन डेका जी का भी मैं अंतर्मन से स्वागत करता हूं। मंच पर छत्तीसगढ़ राज्य के बहुत ही तेजस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी हैं। मैं चाहूंगा कि सभाखंड उनका भी स्वागत करें। इसी क्रम में बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद श्री तोखन साहू जी विद्यमान हैं। मैं चाहता हूं कि उनका भी स्वागत किया जाए। पहले दिन से ही जिनका सहयोग प्राप्त हुआ, ऐसे अरुण साहू जी जो उप मुख्यमंत्री हैं और साथ ही साथ बहुत ही प्रिय बेटे हैं इस बिलासपुर के, उनका भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। हमारे राष्ट्रीय शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास के और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिन्होंने महती भूमिका निभाई, ऐसे डॉक्टर अतुल कोठारी जी का भी मैं स्वागत करता हूं। मेरी जानकारी के हिसाब से शायद सबसे युवा हमारे विधानसभा के प्रतिनिधि श्री सुशांत शुक्ला जी, जो यहां के विद्यार्थी भी हैं, उनका स्वागत करता हूं। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के बहुत ही तेजस्वी और जिनके कार्यकाल में एआईसीटी ने अनेक क्रांतिकारी परिवर्तन किए, ऐसे मैं प्रोफेसर टीजी सीताराम जी का स्वागत करता हूं। धन्यवाद। मैं आज के विशिष्ट अतिथि श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ राज्य को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। आज छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के एकादश दीक्षांत समारोह में आज के मुख्य अतिथि हमारे भारतवर्ष के माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी, हमारे छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमन डेका जी, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री अरुण साहू जी, इस क्षेत्र के विधायक सुशांत शुक्ला जी, आदरणीय श्री अतुल भाई कोठारी जी, इस विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय श्री आलोक चक्रवाल जी, आदरणीय डॉक्टर
टी.जी. सीताराम जी और इस समारोह में उपस्थित सभी हमारे प्रोफेसर्स, अधिष्ठातागण, विभागाध्यक्षगण, शिक्षकगण, सम्मान्य सभी अतिथिगण, अधिकारीगण और आज उपाधि लेने पहुंचे प्रिय छात्र छात्राओं और उनके गर्वित परिजन और मीडिया के साथीगण, मैं आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और नव वर्ष और मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यह मेरे लिए गर्व और खुशी का विषय है कि मैं आज माननीय उपराष्ट्रपति श्री धनखड़ जी और राज्यपाल श्री डेका जी की मौजूदगी के बीच इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी के बीच उपस्थित हूं। दीक्षांत समारोह छात्र छात्राओं के लिए केवल एक औपचारिकता नहीं है, यह एक ऐसा अवसर है जो बदलाव, आत्ममंथन और प्रेरणा का प्रतीक है। आज जब हम गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से स्नातक छात्रों की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं, ऐसे अवसर पर हम इस संस्थान के उन शिक्षकों, कर्मचारियों और नेतृत्व का भी सम्मान करते हैं जिन्होंने इन छात्रों के सपनों को साकार करने में अपना योगदान दिया है। हमारे लिए गर्व का अवसर और भी बढ़ जाता है कि छत्तीसगढ़ का इकलौता केंद्रीय विश्वविद्यालय महान संत बाबा गुरु घासीदास जी के नाम पर स्थापित है, जो ज्ञान, समावेशिता और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक है। अपनी स्थापना के समय से ही इस विश्वविद्यालय ने छत्तीसगढ़ की बौद्धिक प्रगति को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी प्रतिष्ठा केवल हमारे राज्य तक ही सीमित नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी फैली है। हमारा भारत विश्व गुरु के रूप में विख्यात रहा है। इसके पीछे नालंदा और तक्षशिला जैसे ज्ञान विज्ञान से समृद्ध विश्वविद्यालय रहे हैं। हम जानते हैं कि शिक्षा समाज की प्रगति का आधार है और गुरु घासीदास विश्वविद्यालय ने बार बार यह साबित किया है कि शिक्षा कैसे परिवर्तन का साधन बन सकती है। इस विश्वविद्यालय ने केवल शैक्षणिक उपलब्धियां हासिल नहीं की हैं, बल्कि एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है कि किस तरह से एक शिक्षण संस्थान समाज की जरूरतों को पूरा कर सकता है। स्वाभिमान थाली योजना, सारथी योजना, सुदामा योजना, सर्वन हेल्पलाइन और हेल्दी यूनिवर्सिटी मूवमेंट जैसे अभिनव प्रयास यहाँ हुए हैं। विश्वविद्यालय ने नवाचारों के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि हर छात्र को न केवल शिक्षा मिले, बल्कि एक बेहतर जीवन जीने का मौका भी मिले। समानता, सशक्तिकरण और स्थिरता पर आधारित ये सभी प्रयास छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा के साथ गहराई से जुड़े हैं। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय ने शिक्षा को आधुनिक युग की चुनौतियों और अवसरों के साथ जोड़ते हुए एक नई पहचान बनाई है। आपकी उपलब्धियां यह दिखाती हैं कि छत्तीसगढ़ के हृदय में स्थित एक विश्वविद्यालय कैसे ज्ञान और नवाचार का वैश्विक केंद्र बन सकता है। वर्षों से हमारी शिक्षा अंग्रेजी साम्राज्यवादी मानसिकता से प्रभावित रही। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय शिक्षा प्रणाली के आदर्शों के अनुरूप तथा आधुनिक समय की जरूरत के मुताबिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति तैयार कराई। हमारे छत्तीसगढ़ में इसे स्कूली शिक्षा तथा उच्च शिक्षा में अपनाया है। निश्चित ही इससे न केवल ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा मिलेगा, अपितु रोजगार की भी नई संभावनाएं पैदा होंगी। रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हमने नई औद्योगिक नीति भी तैयार की है। इसमें छत्तीसगढ़ में निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए उद्यमों को अनेक रियायतें प्रदान की हैं, जिससे प्रदेश में अगले 5 साल में 2.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश होने की उम्मीद है और 5 लाख नए रोजगारों का सृजन होगा। आईटी सेक्टर में अवसरों को देखते हुए हमारी सरकार विशेष प्रयास कर रही है। हम नवा रायपुर को आईटी हब के रूप में स्थापित करने जा रहे हैं, जहां बड़ी आईटी कंपनियां तेजी से अपने यूनिट आरंभ कर रही हैं। बौद्धिक रूप से संपन्न छत्तीसगढ़ के युवाओं को यूपीएससी जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं में बेहतर अवसर उपलब्ध कराने
हमने दिल्ली के द्वारका में संचालित ट्राइबल यूथ हॉस्टल में सीटों की संख्या को 50 से बढ़ाकर 185 कर दिया है। हमारी सरकार ने पीएससी में पारदर्शिता, शुचिता और निष्पक्षता लाने कदम उठाए हैं। हमने युवाओं का भरोसा सिस्टम में लौटाया है। वर्ष 2047 में जब देश की आजादी के 100 साल पूरे होंगे, इस अवसर के अनुरूप प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। विकसित भारत के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ का विजन भी हमने तैयार किया है और इसे हासिल करने में आप सभी युवाओं की अहम भागीदारी होगी। मैं कहना चाहूंगा कि आप केवल नौकरी खोजने तक सीमित न रहें, नवाचार करें और दूसरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करें। आप बेहतर भविष्य के निर्माण में योगदान दें। इसके साथ ही यह भी कहना चाहूंगा कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में दुनिया आपको चाहे कितनी भी दूर ले जाए, आप विनम्रता, सहानुभूति और दृढ़ता के मूल्यों को हमेशा याद रखें। आप केवल छत्तीसगढ़ का ही नहीं बल्कि भारत जैसे महान राष्ट्र के भविष्य हैं। आपकी क्षमताएं, रचनात्मकता और प्रतिबद्धता भारत की प्रगति को आकार देगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में मैं आश्वासन देता हूं कि हमारी सरकार ऐसी संस्थाओं का समर्थन और सहयोग करती रहेगी जो सकारात्मकता बदलाव ला रही हैं। हमें यहाँ उपाधि प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को मेरी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। पुनः गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के शिक्षकों और नेतृत्व को धन्यवाद, जिन्होंने मस्तिष्क को आकार देने और इस संस्थान को हमारे गर्व का प्रतीक बनाने के लिए अपना अमूल्य योगदान दिया है। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सम्मानीय मंच, मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि पिछले वर्ष इस विश्वविद्यालय ने नैक में A++ की ग्रेडिंग प्राप्त की है। इतना ही नहीं, हम QS एशिया रैंकिंग में 263वें स्थान पर हैं। इसके साथ ही साथ वर्ल्ड रैंकिंग में हम 1000 से 1200 के बैंड में हैं। इतना ही नहीं, टाइम्स वर्ल्ड हायर एजुकेशन रैंकिंग में भी हम लोग 800 से 1000 के रैंक बैंड में हैं। UI ग्रीन मैट्रिक में भी हम लोग 361वें स्थान पर हैं। और अगर देखा जाए तो रैंकिंग के मामले में इस विश्वविद्यालय ने पूरे भारतवर्ष में अपनी प्रतिष्ठा की झड़ी लगा रखी है। मैं आज के अति विशिष्ट अतिथि श्री रमन डेका जी, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ राज्य को उद्बोधन हेतु आमंत्रित करता हूं। माननीय राज्यपाल जी। Respected Sri Jagdeep Dhankarji, Honorable Vice President of India, Sri Vishnudev Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Tokan Sahu, Honorable Minister of State, Housing and Urban Affairs, Government of India, Sri Arun Sahu, Honorable Deputy Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Sushant Shukla, Member of Legislative Assembly, Beltan, Bilaspur, Sri Atul Bhai Kothari, National Secretary, SSUN, Sri Ashok Kumar Chakral, Vice Chancellor of this university, Sri T.C. Sitaraman, Chairman IICT, distinguished guests, dear students, teachers, and my dear journalist friends. It is a moment of immense pride and privilege for me to address the convocation ceremony of Guru Ghazidas Vishwavidyalaya, an institution that has consistently illuminated the path of education and knowledge in Chhattisgarh. Today we gather to celebrate the achievements of our graduating students who are stepping into a world of brimming with opportunities and challenges. To each of you, I extend my heartfelt congratulations and best wishes. This is your day, a culmination of years of dedication, perseverance, and hard work. As we celebrate your academic milestones, let us remember that education is not merely about degrees and accolades. True education encompasses the cultivation of discipline, culture, and manners. These values, deeply rooted in our Indian traditions, are the cornerstones of a meaningful and purposeful life.
Guru Ghazidas Ji, the great saint after whom this university is named, epitomized these principles. His teaching of truth, non-violence, compassion, and harmony continue to serve as a guideline, lights for all of us. Students, as you venture forth into the world, let these values, your moral compass, embrace humanity, respect diversity, and uphold the rich cultural heritage of our nation. In a rapidly globalizing world, these qualities that will distinguish and make you torchbearers of Indian ethos and traditions. It is a matter of great pride that Guru Ghazidas Vishwavidyalaya has achieved now accreditation, a testament to its commitment to excellence. This prestigious recognition places the university among the elite educational granted autonomy institution of India. The strides made by the university in research, patents, and publication in esteemed journals reflect its potential to compete with world-class universities. This achievement is not just a badge of honor, but a responsibility. I urge the university to continue its journey towards global excellence with right vision and determination. We can make Guru Ghazidas Vishwavidyalaya a beacon of knowledge and innovation, ensuring that the students of Chhattisgarh have access to world-class education within their own state. Let us create an ecosystem where dreams can be nurtured and aspiration can be realized. Dear students, the National Education Policy 2020 envisions a holistic approach to education, one that nurtures not just academic excellence, but also emotional, intelligence, creativity, and life skills. I am delighted to note that Guru Ghazidas Vishwavidyalaya has been frontrunner in implementing the National Education Policy. Empowering women through education is one of the most impactful ways to drive social progress. To our female students, I say this: be confident, be fearless, and pursue your ambitions with determination. To the university administration, I urge you to continue prioritizing measures that ensure a safe and inclusive path for all students. Convocation ceremonies are moments of celebration, but they are also moments of reflection. Society is looking to you. Use your knowledge to address pressing challenges, uplift the unprivileged, and create opportunities for others. Whether you choose to work in Chhattisgarh or beyond, carries the values of this university with you and make a positive impact wherever you go. This university's name is a tribute to Guru Ghazidas Ji, a luminary who championed the values of equality, hard work, and compassion. His teaching remains relevant even today, urging us to strive for a society that is just, harmonious, and inclusive. I encourage all students to draw inspiration from his life and work. Let his ideals guide your action and shape your aspirations. Chhattisgarh is a land of unique cultural, geographical, and economic characteristics. It is also a state with immense potential for growth. As graduates of Guru Ghazidas Vishwavidyalaya, you have a pivotal role to play in the development of this region. To the teachers, parents, and intellectuals present here today, I extend my heartfelt gratitude for your role in shaping the future of these young minds. Education is not confined to classroom. It is a lifelong journey that touches every aspect of life. Let us work together to create an environment where learning is not just about acquiring knowledge, but about building character, fostering empathy, and promoting inclusivity. Today, as you stand on the threshold of new beginnings, I urge you to dream big, work hard, and never lose sight of the values that define us. Your success is not just the reflection of your abilities, but also a tribute to the support of your family, the guidance of your teachers,
and legacy of this great institution. Once again, my heartfelt congratulations to all the graduates, faculty members, and parents. May you continue to excel and make your mark in the world, bringing glory to Guru Ghazidas Vishwavidyalaya, Chhattisgarh, and our great nation. My dear students, you are stepping to a second innings. Play with peacefully and fulfill your dream with your will and ability. Life is a journey, and we must complete the journey with the ability and our will. Thank you very much. Jai Hind, Jai Chhattisgarh. धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय। अब जिसका इंतजार है आप सभी लोगों को, मैं माननीय मुख्य अतिथि श्री जगदीप धनखड़ जी, माननीय उपराष्ट्रपति भारत सरकार जी से विनम्र दीक्षांत भाषण के लिए अनुरोध करता हूं। Honorable Governor of Chhattisgarh, Sri Raman Deka, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Sri Vishnu Dev Sai, Honorable Minister of State, Housing and Urban Affairs, Government of India, and your representative, Sri Tokan Sahu, Honorable Deputy Chief Minister Chhattisgarh, Shri Arun Sahu, Honorable Member of Legislative Assembly, Beltara Bilaspur, Shri Sushant Shukla, Honorable Shri Atul Bhai Kothari ji, National Secretary, Rashtriya Shiksha Sanskrit Uthan Nyas, Professor Alok Kumar Chakrawal, Vice Chancellor of Guru Ghazidas Vishwavidyalaya, Dr. T.G. Sitaram, Chairman, All India Council of Technical Education, Sri Sunil Kumar Gupta, Secretary to Vice President, a senior bureaucrat and alumnus of Kanpur IIT. I must recognize presence of Dr. Lalita Prakash Patelia ji, Vice Chancellor, Shaheed Nand Kumar Patel Vishwavidyalaya, Raigad, Chhattisgarh, and many distinguished people present here, faculty, staff of the university, my dear students, their proud parents, and everyone present here. I extend my very warm greetings on this auspicious occasion, the 11th convocation ceremony, to all those who have got degrees in presence and in absentia. We have today, friends, Army Day. I take this opportunity to reflect that it is time for us to honor the unwavering courage and sacrifices of our soldiers who have safeguarded our nation's freedom. Their dedication and resilience remind us of the truest sense of patriotism and selfless service. And our veterans are our precious, priceless human resource. We need to accord our highest regard to our veterans, as they are moral spine of our serving forces. Friends, I seek to avail the occasion to pay my respects to Guru Ghazidas, whose name in one sense is immortalized through this institution. Guru Ghazidas embodied the spirit of unity, inclusivity,
and equality among all. It is due to gurus like him the social cultural character of this belt has remained unaltered. He is a true national icon in our rich cultural tradition. Friends, our Bharat, home to 1/6 of humanity, is blessed to have a galaxy of national heroes like him. We have icons in Maharishi Valmiki, Bhagwan Birsa Munda, Sant Ravidas, Jyotiba Phule, to name just few. Each of them stands as a tall pillar upon which the society's edifice stands. Friends, these illustrious gurus are our authentic icons, a source of inspiration and motivation for us all. We need to practice their teachings. That will be wholesome for the entire society and us as well. Their contributions to the nation's socio-cultural fabric remained for too long a period not well appreciated, underappreciated. However, a big change came in Amrit Kal. In mission mode, an effort has been made, and very successfully, to remember these iconic figures. Some of them remained unsung. Some of them remained not well so sung. But now we are availing every opportunity to recognize their contributions to our culture and also to our journey for freedom. It is soothing that their position in the nation's collective consciousness is now being recognized, rekindled, and reclaimed. Friends, it is concerning that the wholesome thought processes of inclusivity for which they stood, for which they lived, which they propagated, is so to be challenged by some who seek to disrupt organic societal stability by offering allurements to effect conversions. This is repulsive of grain of our civilizational ethos. This is antithetical to our constitutional essence and spirit. It wrongly tempers the valuable right of freedom which we enjoy. Nothing can be more serious, friends, than that these misadventures emanate from an evolved strategy to upset organic demographic equilibrium. We need to rebuff, resist, neutralize these nefarious designs, as these have pernicious potential to emerge as existential challenge to our inclusiveness and civilizational wealth. For graduating students and their families, this is a day of celebration. This is a day of reflection. It is a milestone for students, their parents and faculty members, as also the institution. To the graduates, you worked hard for it. You had many troubled times, late hours. You persevered. You waited for this day. The day has come. Obviously, it's a very satisfying moment for you. And in a sense, a game changer in your political, economic, social journey. I have emphasized in particular the word political, because in democracy this has a deeper connotation. And we expect those in politics, in positions of power, those under oath, to observe highest standards because they shape the policy of the nation. Friends, as I look at you graduates, I imagine the countless hours that you spent, and now you are walking into the larger domain. And let me tell you, you will have to think now.
your learning is never going to end today. Learning is lifelong. You will have to learn every moment. But you are walking in the larger space today with an ecosystem which eluded my generation. We are fortunate to be passing out of such a great university. And you are equally fortunate to be getting into the larger world where you will find an ecosystem that will be affirmative for you. Chhattisgarh is a great state, and its transformation from a developing state to a hub of opportunities showcases the power of focused development and determined leadership. Education is at the heart of this transformation. I am proud that youth of Chhattisgarh, whether they are from cities or remote tribal belt of the state, can now benefit from institutes of eminence in every walk of life. Chhattisgarh now has AIIMS, IIT, IIIT, IIM, and institutes in law. Just imagine what a change for the better in the education landscape of the state. Friends, let us take pride. No nation in the world has grown as fast as Bharat in the last few years. The Indian economy has sustained the globally challenging scenario in high growth, unlike other nations. Our progress has been envy of the world. When the world reeled under depression and stagflation, we have continued to be the bright spot in global economic landscape. For most part of the last decade, we have retained the tag of the fastest growing major economy. Friends, what a journey we have traversed against difficult wind, challenges, terrain, and we are now the 5th largest global economy on way to becoming the 3rd. Our prosperity is not concerned in few urban pockets. And this is a unique feature that has dotted the governance mechanism in the last few years. Now there is deep focus, and the focus has been very successful and rewarding for last mile delivery of public services and benefits. Friends, my young friends, you know it. The technological penetration has made service delivery at the last mile so very effective. You know it. You are fully aware how our economy is getting formalized with the cooperation of ordinary people. Our youth in such a scenario, and you are the most vital stakeholders. You need to notice that startups are now springing not from metros only. They are springing also from Tier 2, Tier 3 cities. We are the largest, 3rd in number when it comes to global ecosystem. 1.5 lakh startups in India, 67 unicorns. And when you focus on this figure, you will be surprised. Majorly, the component that has done it is boys and girls like you. You have brought it about. The world is accolading us because boys and girls like you, who stepped out of universities and institutions, have done this. The foundation of our growth lies in inclusiveness. That's our cultural heritage. That is our civilizational essence. And look at the nature of our inclusiveness. From Jan Dhan accounts to digital infrastructure, from rural electrification to pipe water connections, from affordable housing to healthcare coverage, development has reached the last mile. In a country of 1.4 billion, such accomplishments are not easy. The challenge was Himalayan. It was successfully overcome.
And all these benefits, dear students and distinguished audience, is driven by equality, equity, and fairness. All these benefits are non-discriminatory. Every segment of the populace has benefited from these developments. Friends, India is also a democracy that delivers development. Development has been the main key word of governance in the last few years. Infrastructure in India is expanding rapidly. And just to illustrate, 4 new airports and 1 metro system every year. That is the scale of achievement we are having. When it comes on a daily achievements, you have 14 kilometers of highways and 6 kilometers of railways being added on a daily basis. Friends, there was a time when we looked from a distance a metro system. My generation thought, when will it come to India, if at all? But look at the scenario now. The contemporaneous scene is India's urban transit covers through metro rail now that includes 1,000 kilometers across 11 states and 23 cities. We have surpassed Japan, and there will be a time in the near future when India will be the second largest metro in terms of coverage. Friends, what do we need? We need soothing environment, wholesome environment. And what do we have at the moment? There is an environment of hope and possibility. We are surcharged. We are full of hope. We take things to be possible because there is affirmative governance. The basket of opportunity for our youth has expanded exponentially. I would want you, boys and girls, to focus on that. Good governance is fueling newer ambitions. Your generation is now imbued with one attitude, and that is can do. You don't have to think a second time. Can do attitude should be your attitude because there is affirmative governance, hand-holding policies that will overcome all hurdles that used to be there earlier to fructify an idea that may occur to you. I urge the university management to particularly focus and make our young boys and girls aware of the new vistas of opportunities. Get them deep into the opportunity basket that is ballooning larger day by day. We have opportunities now, right from sea, blue economy to space economy. And that has to be your attention game. You have to look around. Don't confine only to government jobs as a menu. Look beyond and you will find growth opportunities for you very attractive. I have no doubt that our youth will take note of the emerging opportunities. They are challenging. When it comes to technology, we are having a big change. Disruptive technologies is equivalent of another industrial revolution. But this challenge is your opportunity. Make most of it. Your role extends beyond professional success. You can't limit yourselves to your success. You are citizens of a great nation, Bharat. You are the ambassadors of New India. Challenge distorted narratives, and many are coming. Day in and day out, we find narratives aimed at destroying our civilizational fabric, tainting our institutions.
demeaning our constitutional offices. In such like situations, you have to rise to the occasion with power of truth, power of ground realization, which you have noticed. You have to meet them with the power and strength of accomplishments which you see all around. When I come to this part of the country, and when you have a Chief Minister, Vishnu Dev Sai, the name encompasses all that possibly one can imagine, Vishnu and Dev both. He has had a long political journey. I was surprised when I noticed it a few months back. And that means he is fully geared to bring about the change. And mind you, when it comes to change, either we create the change we like, or we are swept by the change that overtakes us. I am sure he is in control of the change that this state wants. This state is blessed with mineral wealth. When I look around, iron ore of Bastar, coal of Korba, bauxite of Manipat, just to name few. And these are lifeblood of India's industrial development today. 15% of India's steel requirements are met from your state. Some concerted efforts will be required to convert mineral wealth to highest levels of collective prosperity. We have noticed, boys and girls, wherever there is mineral wealth, we see rise of people, industrialists, billionaires. But a new facet has to be there, and that I put it as collective prosperity. It would be travesty if this wealth benefits only a handful, leaving out the vast majority of this state's citizens. The Honorable Chief Minister will have to focus to make it obligatory that there is a collective prosperity, and it is not confined to some individuals or corporates. Efficient management and allocation of collective wealth would require our utmost attention. There should be prosperity emanating from the actions of corporates, public sector undertakings that benefit from mineral wealth. The tribal welfare must be integrated as an important component of their functioning. Friends, Naxalism remains a biggest hurdle to development, particularly to the tribal people. This affects lives adversely. I am happy to note that serious efforts have been made in the country for the last few years. In your state also, good efforts have been made, with numerous Naxalites being neutralized, arrested, or surrendering. But this does require concern of every citizen also, because there is no place for Naxalism in a country witnessing unprecedented development. And the development that is happening at the moment is common man-centric. It is centric to marginalized sections of society, vulnerable segments of society. When such is the policy in action, when such are the results on ground, there can be no space for Naxalism. The government has evolved a good policy, and the state of Chhattisgarh is executing it remarkably well. 3 C's, road connectivity, mobile connectivity, and financial connectivity, is bearing fruits, transforming lives and creating new pathways to progress. But whenever there is such kind of a progress that impacts the people instantly, there are sinister forces that seek to defeat these good gestures. And I am sure the state government will be alive to ensure that there is nothing but 100% success of such kind of positive efforts. I call upon everyone to focus on these areas as our tribal people
are our great cultural resource. Human resource, when I see them as artists, as warriors, as sportspersons, one is wonderstruck at their commitment. They are the finest human beings. I am sure if we focus on our tribal populace blossoming, the nation will enormously gain. When Bharat is changing, can we subscribe to the old paradigm? We cannot. I know what the old paradigm was. I take myself back to 1989 to 91. I was a member of parliament and a minister. Things then and things now I would not reflect. But you cannot imagine what was the situation then. And I could not imagine then what the situation is now. 180-degree difference is there. A new Bharat is taking place at the moment and the entire world is accolading it. The entire world is taking initiative of it. And therefore, I call upon you that now there is ease of aspiring and dreaming. And there is full possibility of your dreams fructifying. Graduating students, as you step into new roles as professionals, entrepreneurs, or researchers, remember that success is not measured by personal achievement alone. It has to have positive impact on the society. The education you have received here is a foundation, a launching pad, but ultimately you will have to make success of it. Remember, this is not the end, but the beginning has to be of a nature which may sometimes stun you. There may be setbacks and failures. You cannot always succeed. It has to be a mixed game. You must learn to face these challenges. Failure and success will go hand in hand in real world. And there are no easy shortcuts. You would not find a single success story that is not attended by bouts of failure or even repeated bouts of failure. Chandrayaan 3 is one such instance. Learn to face failures. Learn to learn from such failures. Fear of failure is a myth you need to overcome. It hinders your natural growth and creativity. In conclusion, my young friends, I would like to say the education you have received here is a privilege. The name of this university will lifelong fire you with a zeal to contribute for the society. You have to believe in yourselves for the power that you can change what you want. The journey ahead will not always be easy, but have it from me. In our Bharat, it is worth it. As you embark on this new chapter, may you find joy not just in personal achievements, but in positive impact you create for those around you. I leave you with a thought. When you go out, examine the opportunity basket around you. And you will find you need not move away from your main center to generate the difference for you, for the society, for the state and for the country. And always, my young friends, keep interest of the nation first. Your belief in nationalism cannot be anything but 100%. You have to give 100% to your country, and no interest, personal or otherwise, can override national interest. I wish you well in your journey, and I take the opportunity to request the Vice Chancellor that I would be happy to receive a group of your students as my guests at Indian Parliament. And I'll have the occasion to interact with you at that place as well. I am grateful to the Honorable Chief Minister and the Vice Chancellor for affording me this great opportunity to interact with the students of this university
students of a university that is named as Gurudhar Vishwavidyalaya, students of a university that is situated in a state of India that is Chhattisgarh. Thank you so much. Thank you so much, sir. It's time for national anthem. Please rise on your seats. Thank you so much. Respected guests on the dais will now retreat to the grace room, and all respected are requested to please keep standing on your places. This small procession will be headed by Honorable Chief Guest, Vice President Sir. Behind him will the Thank you so much, sir. Thank you, guest on the dais. Rest are requested to keep sitting on their places after the procession retreats. Our part 2 of the program will continue. The convocation continues. Thank you so much.